And now to invite on stage. Look देख रहे हो? ये होता लुक. And now ladies and gentlemen, जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, दूर दूर बांट रहे हैं प्यार. Give it up for Arjun Kapoor, ladies and gentlemen. पेरिस में विलन ही करके आए हुए हैं अभी. Welcome भाई, so good to see you. Thank you so much मेरे भाई. Thank you यार. Thank you. Happy birthday तो बॉक्स ऑफिस का होगा जब पिक्चर रिलीज होगी. And now ladies and gentlemen, the very gorgeous, the very talented, give it up for Sutaria. Welcome, Tara. सेंटर में. Ladies and gentlemen, खूबसूरती की जब बात आती है, ये जहां खड़ी हो जाती है, गॉर्जियसनेस वहां से शुरू हो जाती है. Give it up for Disha Patani. तुम ही लोग खेल लो. Welcome. Just take care on this, huh? It just goes round and round. Yeah. Ladies and gentlemen, जिनकी विजन है, जिसको अभी बड़े पर्दे पे देखा, एंड हैज ही सेड कि भाई जो भी फिल्में बनाते हैं, ऑफ कोर्स हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वो लोगों के दिलों में घर कर जाती हैं. The one, the only, जिनका सीजन चल रहा है. Give it up for Mohit Suri, ladies and gentlemen. तालियां बनती हैं यार. He's got this amazing ensemble together. लेके आए हैं. ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, लेकिन जिन्होंने इस पूरी फिल्म को बैक किया, उसको आप तक पहुंचाने के लिए जी जान लगा रहे यार. They've put in their money, their sweat, their blood. Give it up for Ekta Kapoor and Bhushan Kumar, ladies and gentlemen. Two of the biggest production studios of our country. तालियां बजती रहनी चाहिए यार. Come on. The mind is 7 chairs here. Welcome, sir. वास्तु के हिसाब से कहाँ बैठना चाहिए? थोड़ा इस तरफ आ जाइए. थोड़ा सा यहाँ. So that you all have. आ गया. करना दो. We'll do the pictures. We'll do the pictures. बैठिए. Please have a seat. Come. Can we have the mics? Thank you, ma'am. जी हाँ, यही है ब्रेकिंग न्यूज स्टेज के ऊपर. पहले आप जी. What else you do? One second. John is sitting closest to the exit. Mike, excuse me. All right, so मेरे पास कुछ सवाल जवाब है, वो कर लेते हैं पहले. तो जॉन भाई, this one's for you. Please tell us. Every time we've seen you on the big screen, ऐसा, और स्पेशली मैन इन यूनिफॉर्म में या हीरो बनते हुए, तो आपसे अच्छा वो कोई कर नहीं सकता. बट यहाँ जब विलन बनने की बात आई, धूम के बाद, आई थिंक ये उसके बाद अभी आप विलन प्ले कर रहे हो. Yeah, I think it's homecoming for me, क्योंकि when I first started films like Jism Bar, it is all about having a negative shade. Right. And for me, Mohit and my first film was together. Right. So, working with Mohit again is really special. And Right. he's a fantastic filmmaker. Playing a villain, like जब वो बोला कि you have to be like this, तो कुछ लगा कि I think sometimes being a hero is boring, so it's good to play something different. ooh. अर्जुन भाई, this one's for you. Please tell us, you're playing this character जो देख के मुझे लग रहा है, मुझे कुछ मत बोलिएगा, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अमीर घर का लड़का, एकदम ऐसा rich dad, spoiled brat, spoiled son, like बिगड़ा हुआ लड़का. What do you have to say on that, please? ऐसा है क्या? Good casting here, Mohit. I would say मेरे बाप दिल से बहुत अमीर है, और मैं जितना बिगड़ना चाहूँ, मेरी परवरिश मुझे बिगड़ने नहीं देगी. लेकिन it's always fun to play what you're not. Right. And I would like to believe मैं
इतना बिगड़ा हुआ नहीं जितना मोहित ने मुझे कास्ट किया है. But खैर some characters suit you, some visuals connect. When I heard this film, when I heard this idea, and I've worked with Mohit before, I had full faith कि हीरो तो प्ले कर चुका हूँ. और इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में अगर घुसने का मौका मिलेगा तो कुछ ऐसा ही करना चाहिए विच स्टैंड्स आउट एंड टू प्ले अ स्पॉइल्ड ब्रैट और अ रिच स्पॉइल्ड ब्रैट एज यू कॉल्ड इट. शायद मेरी शक्ल पे देयर इज इनफ रईसियत, इनफ हरामीपन, आई डोंट नो, बट आई रियली एंजॉयड डूइंग इट एंड फॉर मी आई एम्ब्रेस डिफरेंट रोल्स. फॉर मी इट वाज अ चैलेंज एंड अगर आपको ये लग रहा है यानी कि द कैरेक्टर्स वर्कड, अगर 2 मिनट में आपको इतना कुछ दिखाई दे रहा है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सर लगा, बिल्कुल लगा, इसीलिए पूछ लिया यहाँ पे. थैंक यू सो मच. तारा, दिस वंस फॉर यू. प्लीज टेल अस, यू प्लेइंग अ सिंगर इन द मूवी, राइट? Oh no, I'm actually playing a rock star in this one. Sorry. Yeah. You'll obviously see more in the film, but it was amazing to do this with Mohit and the music team. There's so much that we have that lies ahead of you guys. So yes, a rock star and a singer, but more a rock star. Okay, give it up for this rock star, ladies and gentlemen. Can we make some noise? Disha, this one's for you. आप विलन नहीं हो सकते. किसने बोला? ऐसे विलन सबको मिले. ये विलन नहीं हो सकते. आप तो you're not playing the villain, right? No, I'm just playing a middle class girl with a top class attitude. भाई साहब जवाब देख रहे हो? हैं? किल कर रहे हैं सब. Please tell us something about this character of yours, yeah? Well, she understands her charm and she uses it over men to Right. get what she wants. Right. And she's not a good girl that a guy wants to take home. She's a bad girl that every guy wants to have, I guess. Mohit sir can explain better, of course. कर दिया. She's killed it. Mohit sir, would you like to throw some light on the element of whatever controversy? तो नहीं कहूँगा sir, please. देखो कितनी ऑथेंटिक कास्टिंग की है ना मैंने फिल्म में. सच में. नहीं, आई गेस इतना बुरा तो हम सब में होता ही है. Right. एंड आई फील कि ये एकता का आइडिया था कि तूने अपने हीरोज के साथ दिल तोड़ा है, देव क्राइड, देव दिस थिंग, अभी तुम्हारे विलन्स के साथ थोड़ा वो दे दो. Right. ब्रिंग आउट दिस इमोशन इन, क्योंकि एक विलन भी रोता है, उसका भी दिल भी टूटता है. एंड आई कुडंट गेट अ बेटर प्रोड्यूसर एंड अ कास्ट टू मेक दिस फिल्म. Right. Because it was more than just doing a part, it was also more about enjoying this film, Right. enjoying the bad person inside you. Yeah. And thank you all. बट आपको ये पता था ये इतनी बड़ी होने वाली है, बिकॉज टॉप के 2 प्रोडक्शन स्टूडियोज, एकता जी हियर, भूषण सर हियर, तो पता था ये इसमें तो यही लोग चाहिए. इनसे बड़ा तो नहीं हो सकता था ना सर आप ही के लिए. Well, I think that credit has to go to my producers. Right. Ekta said write the film, and so me and my writers team Right. wrote it. Huh. Kanika also helped, and we fight. When I came to her with the script, she said, "Now you see where I take it." Right. And that's where we are today. So thank you, Ekta, for that. वाओ, I'll definitely come to her. लेकिन उससे पहले भूषण सर, दिस वंस फॉर यू. मुझे बताएं, अक्सर एक्टर्स से पूछा जाता है कि फिल्म की शुरुआत कैसे हुई, ये रोल आपको कैसे मिला, किसने कहानी सुनाई. यहाँ पे जब भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज साथ आते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिड दिस हैपन? मेरा बहुत पुराना रिलेशन है मीन्स एकता के साथ. एंड एक विलन का म्यूजिक भी वी ओनली डिड एट टी सीरीज, एंड दिस टाइम वी वांटेड टू टेक आवर इक्वेशन फर्दर बाय डूइंग अ फिल्म टुगेदर. राइट. सो उस तरीके से शुरुआत हुई. एक रिश्ता इतना पुराना है तो उसको हमने फिल्म प्रोड्यूसिंग में बदलना चाहा. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद एकता एंड बालाजी, एंड ग्रेट वर्किंग विद मोहित. ऑब्वियसली वी आर डूइंग आफ्टर आशिकी दिस फिल्म, एंड आई होप एवरीबडी लव्स दिस फिल्म. इट्स अ ग्रेट फिल्म. आई हैव सीन द फिल्म, सो आई होप ऑडियंस ऑल्सो लाइक्स इट. सर विलन कौन है बता दो ना सर. नहीं, विलन तो थिएटर में मालूम चलेगा. ठीक है सर. ऑलराइट, वैलेंटाइंस डे पे जाएंगे सर. मैं कुछ ज्यादा पूछ ही नहीं रहा हूँ. एकता जी, दिस वंस फॉर यू. प्लीज टेल अस, पुराने जमाने में जब फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर फिल्में बनती थी, प्रोड्यूसर को विलन दिखाया जाता था, ठीक है? इस समय अगर मैं आपसे पूछूं, इस फिल्म में लाइक बीटीएस में कौन है विलन, डायरेक्टर, एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स? अभी भी हम ही हैं sit next to her and ask this question actually. No, honestly, मोहित कहेगा मैं ही हूँ, but नहीं सर, मैं कहलवाना नहीं चाह रहा था. क्यों रिश्तों में दरार लानी है यहाँ पे? राइट. रिश्तों में दरार लाना मेरा पुराना काम है. चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म.
जिसके लिए आए थे वो तो मिल गया, चलो मिल गया, बहुत मिल गया, ओवरडोज हो गया. इससे ज्यादा देंगे तो फिर रहेगा नहीं, चलो जल्दी. ऑलराइट. वो लॉकडाउन था, टाइम ऐसा था कि मोहित के साथ मुझे विलन बनानी थी, बट यू नो वी वर लाइक, हमारे पास कोई अमेजिंग स्क्रिप्ट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, यू नो. मोहित के पास एक आइडिया था और रोहित शेट्टी, हु इज़ माई राखी ब्रदर, ये आइडिया मोहित ने उन्हें दे दिया था. आई वेंट एंड मेट रोहित एंड एक दिन में उसने हाँ कह दी कि यू कैन टेक इट बैक. एंड ही सेड ये सबसे दमदार स्क्रिप्ट है, मैंने मोहित को फोर्स करके लिया था और अब तुम फोर्स करके मुझसे ले रही हो. आई सेड बहन का तो हक बनता है. सो मैंने ले ली और ऑनेस्टली मोहित has a tendency of being the most, he surprises, you know. Sometimes he can really like shock you with not coming for an edit also, and sometimes he's such a mad man कि वो edit छोड़ता ही नहीं और he makes some, he's a crazy genius, you know. I've worked with lots of people and many directors, but if I have to give the mantle of crazy genius, only two men in this industry would get it: Anurag Basu and Mohit Suri. Thank you so much. And both drive me mad. But and you know, I have to, I mean, we don't give enough credit to writers. Asim, stand up. Stand up, Asim. Whatever happens to this film, I am honored to work with a technician like you. Thank you. You, Kanika, and Mohit Suri, I am telling you this, at the launch of the film, are the reason I can say I am proud of this movie. I saw the movie and I am proud of this movie. And most importantly, working with Bhushan sir, the moment Mohit sir got it to me, I went straight to him. There is no better producer than him. He's definitely the hero of this film. बार हीरो एंड ही इज लाइक मैं विलन हूँ यार, तुम कहाँ आज हीरो बना रहे हो. हीरो हीरोइंस डू नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे कुछ विलनी के लिए तैयार हो जाइए. इट्स ओवर टू ऑल यू वंडरफुल पीपल. शूट योर क्वेश्चंस. जब भी आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो क्या आपको आपके आसपास किसी से डर भी लगता है कि विलन भी आ जाएंगे? देखिए, जब एक कहानी होती है तो कोई हीरो होता है, कोई विलन होता है. आपको अपनी कहानी में कभी हीरो बनना पड़ता है और कभी कभी किसी के लिए विलन भी बनना पड़ता है. तो प्यार अगर सच्चा हो तो आप ये नहीं सोचते कि हीरो हो गया विलन हो गया. आप प्यार सच्चाई से करते हो. उसके रेपरकशंस आपके लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे, इनके लिए कुछ और होंगे. तो इन लाइफ वेयर लव इज कंसर्न्ड, इट हैज टू बी प्योर. आप एक तरफ से देखोगे तो कोई विलन, दूसरी तरफ से देखोगे तो वो हीरो. और कैसा रहा पेरिस का एक्सपीरियंस? आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं मुझे? हाँ, तो चेक कर लीजिए. Hi John sir, hi Arjun. Hi John sir, hi Arjun. Hi, firstly, congratulations. The trailer looks very interesting. Thank you. My question is, I have two questions. First one is for John sir and Arjun. You know, Arjun, it is a homecoming for you as well. You started with grey characters in Ishaqzadeh and Aurangzeb, and John sir, like you said, for same. What was it that attracted you to this character or this film? Both of you. Well, I love the script. When I heard the script the first time, I loved it. Then I met Ekta and Mohit in the office, and I was totally floored by the script. It's unbelievable, and I think Mohit is he's executed it even better. So it's absolutely fantastic. Yeah, I think most importantly, I was dying to do an ensemble. I was dying to do a film that brings people together on the big screen to celebrate what I've grown up watching. And what you're talking about, the grey character part, yes, I've been very, very fortunate. Pehli film se hi, there has been enough shades in the kind of roles I've done, whether it's Aurangzeb or, like you said, Ishaqzadeh, my starting point also. I think both those factors, I never have been scared of playing grey. So it's exciting for me to come back to where I started. I've done Half Girlfriend with him. I've done Key and Ka, I've done Two States. I've done all sorts of films, but I always wanted to go to the dark side and to do it in this kind of a setup. You know, at the end of the day, you need to trust people when you work with them. Script तो बहुत अच्छी थी, लेकिन साथ में I think for somebody like me who was coming back into doing something so, I would say, fun and dark, you need to know that your director knows the space better than even you do.
and he's somebody who has like I remember watching Murder 2, which I absolutely loved. I mean, आप लोगों ने मैंने यही पे PVR में ही देखी थी. And you know when you see the villain in that film, it is as exciting as Imran Hashmi's role. Prashant Narayanan played the villain. So when you have a director that can bring out that darkness and still make you have a story, हर villain की एक origin होती है, हर villain का एक reason होता है वो villain क्यों बनता है, वो मुझे बहुत exciting लगा. So I think the faith and trust that I had in Mohit and the team with the producers and having such an ensemble, for me it was a no-brainer actually here. And Disha, there's a trivia here. I had called to him with villain 1 also. So this time when I went, he said, "ये वाला जाने दे तू का." I think I called up Arjun. I said, please do it. Yeah, we went and he said, "अच्छा तू second part के साथ है, ये वाला जाने दे दूँगा अभी." That is a fact. उस समय मेरे तेवर कुछ और थे. मैं ऑलरेडी तेवर कर रहा था, मेरा मजाक आप प्लीज हेडलाइन गलत मत बनाना. मैं अपने फादर की पिक्चर कर रहा था तो मैं नहीं कर पाया था उस समय, and that's the true reason. But this time when he did come to me, I said, "यार, it's destiny, and I think it's meant to be that I'm a part of this film." So I decided not to let it go. Yeah. and Disha, after Malang, then Ek Villain and Yodha, is it a conscious decision on your part to do action thrillers? I mean, I love action thriller as a genre, and I've grown up on this, and I got really lucky to work with Mohit sir, with Malang, and I think he gave me that inspiration to go ahead and go all out. And yeah, I mean, I love the genre. I would love to do even more. It's my second film with him, and I hope Mohit sir is not bored of me yet, because I love to work with him again and again. No, like normally people call up your guy friends and ask them that which action film masala I want to watch in the night, English, Japanese, anything. I call up Disha and I say, which is a good commercial Japanese film to watch? She'll give you Korean films. She's the girl who thinks like full on their hardcore. I have my question for Arjun and John sir. John sir over here, right? Yeah, hi. Yeah, so the movie talks a lot about one-sided love, and often what happens, I know, be it teenagers or anyone maybe above their 20s, one-sided love, when people fail in love, a lot of wrong things tend to happen. They tend to divert their energy towards all sorts of wrong reasons. So what I want to know from your end, being public figures, is that what would you say to those people who are probably heartbroken? How do they channelize their negative energy into something productive and constructive? You've got the theme of my film correct. But that is what it is. I mean, principally, आपके सवाल में ही एक जवाब है, because you have to find something constructive. At the end of the day, I think जितने भी लोग यहाँ बैठे, सबका दिल कभी ना कभी टूटा है. Somebody's fallen in love, somebody's हाँ कि ना? बिल्कुल. अच्छा, किसी ने किया, वो कौन है? महापुरुष? हाँ. नहीं, आप स्कूल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए. देखिए, प्यार, मैं नहीं मानता कि प्यार आपको बचपन में भी होता है. यू ग्रो अप, यू वर्क, यू मीट पीपल, यू ट्रैवल. लव इज समथिंग दैट विल ब्रेक यू एट टाइम्स, बट इट इज ऑल्सो व्हाट मेक्स यू, एंड यू हैव टू फाइंड द पॉजिटिव इन दैट. एंड द थीम ऑफ दिस फिल्म हैज ऑल दोज शेड्स इन इट. सो आई थिंक एडवाइस देना इज वेरी सिली, बिकॉज हमको नहीं पता उन पे क्या बीत रही है. Genuinely, in all genuineness, मुझे नहीं पता how to give advice where love is concerned, because beyond the point, how do you know what is happening in somebody's love story? But at the end of the day, I would say to be able to fall in love is amazing. To be able to rise after you fall in love and had your heart breaking is even more amazing, because you can actually understand the value of what life is. I feel दिल टूटना बहुत जरूरी होता है. उसके बिना आपको जिंदगी में वो रस नहीं मिलता. You know, this film has a lot of that. There is a lot of heartbreak, and that happens to all of us. I feel there is some strange, mad joy also in going through a heartbreak and rising above and beyond it and becoming your own person after it. And I'm sure that a lot of people who have had terrible heartbreaks and breakups and heartaches, और उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को संभाला या सुधारा है. So I think full credit to those people, and that is what a true lover is. You don't always get what you want, but you have to live your life and continue loving and wishing well for that person as well. Thank you, sir, for answering. John, sir, your views on this? Same. So, I don't know why I'm in this press conference, because Arjun is so fantastic with all these answers. And then when I see Disha and Tara here, that's the first thing I said. I said, हमारी क्या ज़रूरत है यार? This is so lovely. Thank you.
तो ये दोनों जो लुक है आप दोनों का, मतलब दाढ़ी में और स्टड लुक, वो आयप्पम कुशियम के लिए है या मतलब आपके तेहरान और वो लेडी किलर? अच्छा, आप आगे की बात करना चाहते हो? तो आप जब इंटरव्यू करेंगे हम अभी फिलहाल संकेत मिल सके। ये लुक मतलब किस चीज की? टॉक मोर यार। आई थिंक जो आप अभी पूछ रहे हो या फिल्म की लुक की बात कर रहे हो यार? ये अभी की वाली लुक। अभी की लुक, ये मैं अभी तैयार होके आ गया हूँ, ये फिल्म की लुक ही है यार। इट्स वेरी सिमिलर टू आर्म ड्रेस्ड एंड बिहेविंग इन द फिल्म, सो इट्स द सेम वाइब। जॉन सर की लुक जॉन बताएंगे तो बेटर होगा। I'm shooting Tehran next. ओके, सो और दोनों कब शुरू करेंगे ये पंकोशियम, अगर वो अनाउंसमेंट कर सकें आप दोनों? You want to become my manager? नो नो। अच्छा, ओके, अच्छा। एंड दिशा एंड तारा, आप दोनों के लिए मतलब सवाल है, ठीक है? तो आप दोनों ने मतलब इस फिल्म में कितना ये है जी जी टॉर्च मारो। तो दिशा और तारा, ओके, आप दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर के प्रेप के लिए क्या क्या किया है इस फिल्म में? पहले आप। Okay. I just followed my director's advice, and also I remember watching a lot of these negative movies at night, and there was a point I was like, sir, I can't watch it anymore because it's just like making me into a different human. But yeah, I just followed what he told me. I think Mohit sir really knows what he wants, and then he just makes everybody's life easier. For me, actually, my character is not from Bombay, sir. And what was really interesting and fun was that Arjun and I didn't really know each other very well, or we'd not acted together before. So we met for the first time on set in Goa. We were shooting a segment of the film in Goa. So we actually didn't rehearse, didn't do any prep or readings, but I feel like that actually really helped our performance and helped the film. Because they have to hate each other in the first. We have to hate each other in the first half, and then obviously it takes its own course. That came naturally to. Yes, it was fab. And for music, actually, there was some music prep for me, but I can't talk too much about that. So, बाद में पता चलेगा. No, you must talk, yeah. So Sutaria is singing really for the film also. So she actually is someone who is a trained singer and stuff like that. And I was like, wow, this is a double whammy. You've got the actor. अपनी लाइफ में कभी ऐसा कोई एक्ट किया हो जो विलेनिश टाइप का हो? मे बी इट कुड बी इन अ प्रैंक और वेरी इन अ स्मॉल वे ऑल्सो, और ऐसा कोई काम लव में, मतलब प्यार में, जैसे कुड बी एनीथिंग, हाथ काटा, ब्लड से लेटर लिखा या एनीथिंग, उस तरह का कुछ काम किए आप लोगों ने? जॉन, आपसे स्टार्ट करें। डिड यू हियर मी? जॉन, हाय शायद आपने कोई ऐसा काम आप लोगों ने किया है विलेनिश टाइप का रियल लाइफ में? इट कुड बी इन अ वेरी स्मॉल वे आल्सो, इट कुड बी अ प्रैंक, और या फिर लव में आपने कुछ ऐसा कुछ काम किया हो जो कुड बी इट कुड बी कुछ भी थोड़ा अतरंगी टाइप का, टू शो योर लव. You have to. He's asked you, but everyone. I can't become your manager now. No, it's a bit late. I need commission for that also first. You can answer the question. But he wants to know what you did for. Have you done anything that was dark for love? Any villainy? No, I'll think about it. I'll come to it. But why me? Arey, Bhushan sir. Any Arjun, you say on my way up. I know one thing about John. I can say something about John. John has the most subtle and cold way to be sarcastic. Okay, it's a great, like the day I'm looking overweight, I've put on 10 kilos. You're looking very thin, Baba. Baba. You're looking so good, Baba. Baba, you're looking so good, Baba. Baba, today you're looking very good. This I've not seen better style in that. आप सबको पता है. अच्छा, सॉरी, डिविएटिंग. आप सब जो इधर बाबा 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 बोलते हो ना, रणवीर और मुझे, वो बाबा बाबा कहाँ से चालू हुआ? यहाँ से. अरे बाबा, यू लुकिंग सो गुड, बाबा 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 बाबा, ये है ओरिजिनल जिनकी वजह से चालू हुआ बाबा 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 बाबा. या जवाब दोगे आप सब लोग एक्चुअली? विलेनी मुझे नहीं पता यार. I can't remember often. Genuinely थोड़ा ज्यादा याद है. चाइल्ड इन स्कूल टाइम, कभी कॉलेज स्कूल टाइम में अगर अपने नस काट रहा था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. नहीं उस वक्त नहीं यार, मेरे लाइफ में कुछ विलेन आए
तो मतलब my best friend and me, I went to my best friend one day and said, I like this girl, can you find out what she thinks about me? वो मेरी लाइफ का विलन बन गया. He didn't go and ask about me, he asked about himself and he started dating her after that. I think I know who that is. तो यार ऐसी चीजें हुई है लाइफ में. मैं एक्चुअली विलन ज्यादा स्क्रीन पे प्ले करता हूँ, ऑन ऑफ स्क्रीन नहीं. एक तो आपने भी कहा कि यू आर अ विलेनिश काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन आपने कभी कुछ किया हो? You know, the tagline of this film is heroes don't exist. You know that, right? I don't think anybody on this stage can say that they've not done anything villainy in love. Everyone has. I don't think I've done something villainy, but I have on air proposed to someone. I told someone to watch an episode on air, and I proposed in that episode. Wow. मोहित, जैसे एक कॉप यूनिवर्स की फिल्में बन रही है, तो ऐसे हो सकता है कि आगे जाकर एक विलेनिश टाइप की, या एक विलन रिटर्न, और फिर आगे आगे एक विलन का यूनिवर्स. क्या लगता है कि विलन का यूनिवर्स बनेगा या नहीं? हाँ, पहले ये चल जाए. 8 साल लगा ये स्क्रिप्ट लिखने में. आई थिंक 8 साल बाद ये स्क्रिप्ट आई. आई मीन, एंड आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज, yes, we definitely would think about that. That's why there are connections to the previous part. But it's important that this film does well. And more than, I went with one script to Ekta before, and I'm thankful to her that she completely rejected it. She completely rejected, said this is not villain. तो फिर ईगो पे आ गया. तो फिर डे नाइट बैठ के फिर 2 दिन में वापस ये स्क्रिप्ट लेके आया. अंदर का विलेन जागा. या जागा फिर. And I think that's most important, and to not make it just for a proposal or a project, or just because everyone else is doing it, but when we genuinely feel we can sit here after COVID, after everything, and promote it day and night, that's how film should be made. हुसैन सर, या तो ये मतलब फिल्म जिस बजट की थी, और आप और एकता दोनों अपने अपने इंडिविजुअली मतलब कैपेबल हैं कि इस फिल्म को इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस कर सकते थे, तो फिर दोनों ने मिलके क्यों प्रोड्यूस किया है इसे? 1 और 1 11 इसीलिए. और पिछले 2 सालों में कोविड का जो मतलब ये चला है पूरा टर्म, तो ऑडियंस की टेस्ट बदली है. ठीक है, ऑडियंस कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी हिंदी की फिल्मों से. तो आप लोगों ने भी, आपने, एकता जी ने, मोहित जी ने, ये मतलब सोचा कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ और चेंजेस किए जाएं कोविड के मतलब टेस्ट के हिसाब से, या फिर वही स्क्रिप्ट रखी है आप लोगों ने? No, it was written before, but there was a complete, you're right, we rewrote it completely, and that's when Kanika also came on board, and we rewrote the whole thing during COVID, because it was clear both Ekta and Bhushan ji wo दुनिया same नहीं रहेगी. There is a theatre experience and there's a home experience, and we wanted to go out and make a theatre experience with this. जिस तरह से आप आज बैठे हैं एकदम मासूम बच्चा लग रहे हैं. With all due respect, एकदम कोना दे दिया है आपको, बैठे चुपचाप, जब कहा जाए तब बोल. He is in character. जब फटेंगे ना देखना फिर क्या होता है. जॉन सर, जब मैं एक विलन की बात करता हूँ, काफी कामयाब फिल्म रही है, रितेश देशमुख के किरदार को आज तक याद करा जाता है. जितना हमने ट्रेलर में देखा उससे एहसास तो ये होता है कि आप ही विलन हैं. तो देयर बी अ कंपैरिजन, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? We just hope that the franchise does well, और मेरे हिसाब से I think this film is fantastic. So I don't think there'll be a comparison. I think there'll be a celebration after this film. So I really hope for Bhushan, because I'm working with him on so many films. Ekta is we're from the same school also, and also she's lovely, and I worked with her in a film before, Shootout at Vadala. तो मैं यही hope करूँगा कि this film does well for all of us, and for Mohit, who I'm totally in love with before and after this film. He's made such a beautiful film. Expectation already high है, trailer बहुत amazing है. मैं बोल लो यार, सबके पास आ रहे. जॉन सर, ट्रेलर बहुत अच्छा है, और एक्सपेक्टेशन पहले से ज़्यादा हाई हो जाएंगे क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा कटा है, क्योंकि ट्रेलर इज ऑलवेज द फेस ऑफ द फिल्म. जब इस तरह की एक फिल्म की फ्रेंचाइजी आती है, उसका सेकंड पार्ट बनता है, जब आप हिस्सा बनते हैं या कोई भी शख्स उसका हिस्सा बनता है, स्पेशली मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है. यू नर्वस और एक्साइटेड?
No, I think finally it's the audience, right? You have to respect the audience and they have to see the film. So you can promote it as much as you want to, you can do whatever, but finally it's the film that's going to talk. So excitement ज़रूर है क्योंकि we've all loved what we've seen. So there's a lot of excitement, but it's up to the audience. Equivalent. What are the pressures on you as a producer and what is the idea of sequels for you? सी प्रेशर्स तो रहते ही हैं लेकिन बेनिफिट ज़्यादा रहते हैं बिकॉज इट्स वेरी फेमस फ्रेंचाइज होती हैं जो हिट फ्रेंचाइज होती हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है लाइक वी गॉट इन भूल भुलैया आफ्टर आई गेस वी मेड आफ्टर 14 years ये 8 साल बाद बन रही है तो वो बेनिफिट ज़्यादा रहते हैं आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रेशर रहते हैं अगर आपके पास सेम डायरेक्टर है गाने हैं सब कुछ है एंड वी हैव सच अ ब्यूटीफुल स्टार कास्ट तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है लेकिन यस ऑब्वियसली एक कंपैरिजन लोगों के माइंड में तो रहता ही है जब ऐसे सुपर हॉट हैंडसम मेल स्टार्स और सुपर सेक्सी सुपर हॉट फीमेल स्टार्स एक साथ आए तो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे उसको एक विलन नहीं सुपर विलन बोलना चाहिए एज अर्जुन टोल्ड कि उनकी लाइफ में उनका जो दोस्त था वो उसको हीरो समझते थे लेकिन विलन निकला आप तीनों से पूछना चाहूंगा कभी ऐसा हुआ है जिसको आपने हीरो समझा वो विलन निकला या वाइस वर्सा जिसको विलन समझा वो हीरो निकला हो ऐसे हम तो I don't think so. एंटरटेनर बनाई थी ये तो बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है आप हम सबसे पूछ रहे हो तीनों से आपने तो बताया ही कि आपने एक बार मैं बोलना बंद कर देता हूँ I honestly don't think so hard. Your questions are really complicated, and I'm a very simple guy. इनके questions भी काफी complicated थे. It's like one quiz contest going on here. But I'm here for the film, and I'm here to celebrate a good film with some nice questions. And I think we've got a fantastic producer, two fantastic producers, fantastic cast. Outstanding director, fantastic partners sitting here. तो अगर आप इनके बारे में कुछ पूछे, then I'll be very happy. I'm happy Anil Thadani is distributing this film, so I'm very excited. Our friend Shad Randhawa is in this film. Shiv Chanana यहाँ पे, Alok, Haseem, Varun, Amul. I mean, fantastic people here who made this film happen. तो इनको credit देना चाहूँगा मैं. Come on, boys. Hello. Mohit sir over here. Mohit sir on your right. Mohit sir on your right. Yeah, on your right, sir. Right. Oh, yeah. Sir, you have casted two hunk of Bollywood. That is John sir, who is physic freak, and of course Arjun sir, who have already. आपके गले मिलना चाहता हूँ आपने मुझे जॉन की तरह हंक बुला दिया आ जाओ. Thank you, sir. Sir, when you were making this movie, and all both were like और movie में आपका बताया गया कि both bare body also. तो आपने जैसे इनको बाबा बोलते हैं, जैसे आपने उनको कुछ अपने ओर से टिप्स दिया क्या कि ये रोल के लिए? देखिए मैं फिल्में ऐसे बनाता नहीं हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं और मेरा काम है आई थिंक यू डेवलप द कैरेक्टर विद द एक्टर okay and you have to play to the actor and how he's doing it you can't convert them to become somebody else but I must say it's it's not just the men mujhe one of the girls I'm not mentioning who ke on the spot we felt ke I need to hold a hammer and enter the scene and it was her idea not mine at all so I think the process of making a movie cannot be a regiment you have to play with the actors and most importantly जितना बुरी चीजें करनी थी वो थोड़ा डिस्कवर कर लिया इन लोगों के बारे में I think that was a big advantage. सबकी सीक्रेट पता है अभी मुझे. सारा एंड दिशा मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि ट्रेलर में तो हमने सिर्फ एक ही सीन आप दोनों का एक साथ देखा है वेल आप दोनों ने कितना स्क्रीन स्पेस एक साथ शेयर किया है फिल्म के अंदर इसके बारे में बताइए और कितना एंजॉय किया एक दूसरे के साथ काम करके. You can't अरे ये तो प्लॉट बता रहे हो आप जो फ्री में पूरी पिक्चर देखना चाहती हो यहाँ पे. 29 July is when you'll get to know. हेलो कितना एंजॉय किया. एंड जॉन सर आपसे भी एक सवाल ये है कि सर यो जब हम फिल्म की बात करते हैं जैसे आपने कहा ये आपका कमबैक है तो बिपाशा के साथ में आपका जो
बॉन्ड था या जो स्क्रीन स्पेस आपने जो शेयर किया है वो आज तक हम याद करते हैं और बहुत ही पसंद किया है। वेल दिशा के साथ क्या वैसा ही बॉन्ड और वैसा ही स्पेस देखने मिलेगा हमें? आप I think there are certain actors that I've worked with in the past जिनके साथ the chemistry was lovely, and I think with Disha it was absolutely fantastic, and you'll see it on when you watch the film. क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ ऐसे होता है कि when you get on screen you see two people and you say it's working, it's really working. So I think with Disha we felt that it was really nice, special. I was sorry to but I was lucky to I was an assistant working on the set where John used to do love stories. So when I met John, I said I want to do a love story. I want to do a more than a heartbreak story with you. And I think we never worked on an action film. I wasn't there in Elan, but I was there in the beginning, and I think John's not done that, and he's so good at it. So I was so happy when it was like going back to where we all started, and we could play this thing. So I think I have tried to do something different with John. He's not just the action hero, he's a man with a heart, a villain with a heart. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टारकास्ट से तो हम सभी ने बात की, लेकिन फिल्म का ट्रेलर जैसे हमने देखा तो रितेश के भी कुछ ग्लिम्सेस दिखाए गए हैं, तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या इसके रिटर्न्स में लाइक एक विलन रिटर्न्स में हम रितेश की भी लाइक कमबैक करते नजर आएंगे वो? अगर इसका जवाब मैं सच्चा दूं तो आई थिंक दे विल किल मी द प्रोड्यूसर्स। उसके लिए आपको थोड़े पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, एंड यू हैव टू वॉच द फिल्म। But yes, there is a foundation. ये सिर्फ एक कहानी प्रोजेक्ट नहीं थी. There is a lot of writing that has gone into this film, and I think you should stalk Asim after this. Yeah, sure. Thank you so much, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, and would like to invite on stage some very important people जिनके बिना शायद ये नहीं हो पाता. Shiv Chanana साहब from T Series, give it up for him, ladies and gentlemen. Miss Ruchika Kapoor from Balaji, Amol Mohan साहब is here, Mr. Patani from AA Films. Asim sir, please आइए. Amol. Anand sir. Mr. Thadani, of course. Thadani. Sorry. Who's the first? Your mic. जी Twinkle, 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 twinkle. Yeah. Don't come on the center once. It's okay, these are only legal points, Shalim is right. Commercial points are only some legal points. Because आज ये project is Also, let me tell you, बाहर भी we have this entire setup एक विलन रिटर्न्स का, so बाहर भी आप लोगों को मौका मिलेगा. आइए. हमने अरे भाई हम लोगों ने पोस्ट कर दिया, आपने
अच्छा वील डू द सोलोज, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू बाहर भी पूरा सेटअप है एंड उसके लिए भी तैयार रहिएगा, बाहर भी यूल गेट दिस अपॉर्चुनिटी. वील डू सोलोज. Thank you so much.